हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आपने थर्ड क्लास या नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है मैटर। सेकंड इज मैटर के टू टाइप्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। एंड फिजिकल के थ्री टाइप्स होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। केमिकल के होते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो आज की इसकी वीडियो में हम आपको पूरे कॉम्प्लीमेंट एक अच्छे से समझाने वाले हैं, जिससे आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो आज की व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट प्रेजेंट इन surrounding our anything that occupies space having mass also, like in our home. In our home, very types of materials like cooler, it has a matter because it occupies space and having also mass. So everything that is present our surroundings, that is called matter. Matter are two types. Matters are two types. It's called physical and chemical. What is physical matter? Physical matter वो होता है, it based on ordinary condition and temperature and pressure. वो अपनी इस फिजिकल चेंज होता है इसमें, बिना केमिकल चेंज के। लाइक आइस, दिस इज आइस इन solid shape, melt into liquid shape, and after melt it's a variation and made into gas. What is solid? फिजिकल के तीन प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अभी अब देख लेते हैं फिजिकल मैटर की डेफिनेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक फिजिकल स्टेट है जिसके अंदर कंडीशन एंड टेम्परेचर और प्रेशर का प्रवाह होकर ही चेंज होता है, बिना कोई केमिकल एक्टिविटी के। And that what is solid? This is a physical state types first. What is solid? A substance is said to be said it is passes a definite volume and a definite shape. Solid वो होता है उसके पास एक definite shape हो और definite volume कवर किए हो और definite shape हो, उसे हम solid बोलते हैं। लाइक शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, etc। जैसे कि आयरन है, उसके पास वॉल्यूम भी है और डेफिनिट शेप है, इसलिए उसे हम सॉलिड बोलेंगे। व्हाट इज लिक्विड? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड if it is passes a definite volume but not a definite shape। उसके पास वॉल्यूम तो होगा डेफिनिट, लेकिन शेप नहीं होगा। They can take shape of vessel in which they are placed। जो भी वेसल में उस लिक्विड को रखा जाएगा वो उसी शेप का ले लेगा, उसी का शेप ले लेगा, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। लाइक वाटर, वाटर हैज वॉल्यूम बट नॉट शेप that we can keep in anything like glass and other। It can take that glass shape and other। So a liquid, a substance is said to be a liquid। अपन उस चीज़ को लिक्विड बोल सकते हैं if it is had definite volume, has definite volume but not a definite shape। They can take shape of the vessel in which they are placed। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिल्क, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, एल्कोहल, etc।
एंड थर्ड नंबर पे हमारा गैस। ये फिजिकल टाइप का थर्ड है, फिजिकल मैटर का। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस। अपन उस चीज को गैस बोल सकते हैं इफ इट इज नाइथर passes a definite volume nor a definite shape। ना एयर का कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना डेफिनेट शेप होता है। They is, this is because they completely occupy the whole vessel. This is because they completely occupy the whole vessel in which they are placed। तो गैस वो होती है जो completely जिस भी वेसल में रखी हो उसका होल शेप लेके और होल वॉल्यूम पूरे में प्रेजेंट होती है। A substance is said to be a gas if it neither passes a definite volume nor a definite shape। ना अपन उस चीज को गैस बोल सकते हैं जिसमें ना तो शेप होगा ना वॉल्यूम होगा। This is because they completely occupied the whole vessel in which they are placed। अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर इन आवर एटमॉस्फेयर that we can to place and volume and we can take volume. Now we can talk our next topic, chemical classification. What is chemical classification? That we have learned in that chemical classification is a type of mixture. Mixture have two types that we have seen in chemical physical matter and that chemical matter. This is matter also and classification also we can tell. What is chemical classification? It may be classified into two types। ये केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप में क्लासिफाइड हो सकता है। फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस has consist also two types substance। First is element, second is compound। And two chemical classification is two types। So first is pure substance, second is mixture। Mixture also have two types, homogeneous mixtures and second heterogeneous mixtures। Now what is pure substance? We can explain that pure substance is a material containing only one types of substance। Pure substance cannot be split into similar substance by physical method। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो कंटेनिंग यानी वन टाइप का ही सब्सटेंस रहे जिसमें ओनली प्योर सब्सटेंस नॉट मिक्स दैट लाइक इट इज हाइड्रोजन ओनली इट like container it is hydrogen or hydrogen so we can tell that is a pure substance pure classification। But in this the hydrogen this container and one O one CO2, this is called mixture because they are mixed so that we can that are mix of others atoms molecules that is called mixture that है pure it's called pure substance। what is substance? अपन substance किस चीज को कह सकते हैं? अपन मैटर को भी substance कह सकते हैं या नहीं? नहीं, मैटर को substance इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि substance is came only but to chemical change properties that like Na can change and react so that we can talk its substance। Mixture have many kinds of metals so we cannot talk matter is a substance। Matter has consist physical, chemical and other
So we cannot talk that substance matter is a substance. So only we can talk pure substance. And pure substance has two types. First, elements. Second, compound. What is element? Now, element is a pure substance that like we Na, Mg, and Ca. This is elements. But what is compound? Now, firstly, I am giving example, then I can explain everything in a easy way. What is compound? Compound is a HCl like H2O and CO2. Now, element is a pure, only pure that have made Na, Mg. It is pure, but compound has two atoms of mixtures like H2O, CO2 that has mm, bond, like we tell bond H2O, H0H. It has bond and made H2O, H2O. So that have bond we can tell compound. It is compound. And H only it can elements. Now in a we will see in elements and compound in a easy way with definitions. What is element? Element is a pure substance that we can talk. Pure substances that containing only one kind of atoms, that we can also talk that contain one only one type types of atom. Element is a only one type containing one types of element atoms. And elements also classified into three categories. एलिमेंट को भी थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट, metal. You can also learn in third and ninth class also. Non-metal. Third, metallized. इसके अभी एग्जांपल्स आपको दे देते हैं, उसके बाद हम इसको खुद अंदर जाके पढ़ेंगे, फिर विद डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे इसको. फर्स्ट एग्जांपल है जिन मेटल का, CuSgSnPd. ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा थोड़ी बहुत. तो अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हम आपको पूरा फिर से पढ़ा देंगे. नॉन मेटल होते हैं जैसे N2O2, Cl2Vr. ज़्यादा आपको एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि आपको अगर भी कुछ समझ में भी नहीं आया तो कुछ नहीं है, हम आपको एक बार और अच्छे से पढ़ाएंगे. मेटलॉइड्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं जैसे BSI, ASTEETC. अभी अपन कहाँ पे थे? हाँ, एलिमेंट्स हो चुका था. उसके बाद सेकेंड था कंपोनेंट, compounds. Compounds have same types of molecules, same types of molecule. आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है उस वाले एलिमेंट में.
सेम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस थे. Substance or atom. Only one types of atom. अब I can understand what is atom you and what is molecule that you can't confuse. Atom is of one type. That is one atom we can study. It has a proton, electron, and neutrons. It's called atom. And what is molecule? Molecules are like H2O. It is a molecule. HOH. It has bond and made H2O. It is a molecule that has only bond. Now we can also study that atom has a pure substance and molecule have two atoms, bond atoms in bond. H O H H. It has bond to and made molecule. So compound, what is compound? Compound has a some types, same types of molecules. Same types of molecule. Molecule, you know that I can explain that we can. गाइस मैं एक बार और आपको समझाता हूँ आपको कंफ्यूजन होगा तो लाइक इट इज एटम it's we can give its elements then atom plus atom is called molecule and molecule plus molecule is called compound. It's called compound. You can now take this and see this. अगर आप सभी को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में इसकी लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से इसको ले सकते हैं. Now atom is a fundamental. ना एक बार फिर से हम आप जो जो पढ़ा है आपको वो रिवाइज करवा देते हैं. फर्स्ट matter is everything that is present in surroundings. What is physical and chemical? Physical quantity वो होती है जो physically change हो और temperature और condition and pressure पर. Physical has three types of solid, liquid and gas. Solid is a solid that have definite shape and volume that is called solid. Liquid has had volume but not had a definite shape. It takes vehicle that we can place to water and take shape of this vehicle. And guess what is gas? Gas has no definite shape, don't definite, neither we definite have shape, volume, and another. It can take place in a volume that we can place in a vessel and types of that we can place. And chemical have two types, pure substance and mixtures. In mixtures we can talk mixtures in another video. Next video we can talk
मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर्स के टू कंपाउंड्स होते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेक्टोजीनियस मिक्सचर होता है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली